safe to come to Pakistan, like if they ever come over here? So to all the people, you know, who are not from Pakistan, who are watching this video, I would like to say, because you know, now the वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम माई साइड. आई होप आप लोग जी सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे. सो आई एम ऑल्सो डूइंग प्रीटी वेल. सो आई एम स्टिल इन कराची एंड सो आज की जो है जी बेसिकली वीडियो, आई एम गोइंग टू ईट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बिरयानी ऑफ कराची. और मैंने पहले भी बहुत ज़्यादा तो नहीं ट्राई की हुई, बट आई हैव ट्राइड इट लाइक फ्यू टाइम्स. बट अभी तकरीबन आफ्टर लाइक अ रियली लॉन्ग टाइम मैं जा रही हूँ टू हैव दैट. सो टुडे आई विल बी शेयरिंग दैट एक्सपीरियंस. और सो एवरीवन हु इज़ वाचिंग, सो आई सबको आइडिया होगा दैट कराची में जो है जो बिरयानी इज़ लाइक वेरी पॉपुलर और ये बहुत ज़्यादा बनाई जाती है. लाइक कोई भी इवेंट हो, कुछ भी हो, खुशी का मौका हो या दुख का भी इवेंट मौका हो, तो लोग जो बिरयानी है इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ डिश ओवर हियर. और बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं होती है बनाना, बट ये हर घर में बनती है. कोई भी आपको इवेंट हो, कोई भी दावत हो, तो बिरयानी के बगैर कुछ भी नहीं होता. सो दैट्स व्हाई पीपल ओवर हियर लाइक दे लव. एंड ये मेरी भी इट्स वन ऑफ द फेवरेट डिश. और यूजुअली अगर हम कंपेयर करें बाहर की बिरयानी को घर से, तो बहुत दोनों का डिफरेंस होता है आई बिलीव. बिकॉज जो घर में हम बनाते हैं उसको थोड़ा सी डिफरेंट उसका टेस्ट होता है, एंड बाहर की जो बिरयानी होती है उसका टेस्ट ऑफ कोर्स डिफरेंट होता है. तो आई थिंक दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, बिकॉज जो घर का खाना है उसका आप बाहर के खाने से कंपैरिजन नहीं कर सकते हो. सो एनीवेज, तो आज हम लोग का मूड था टू हैव बिरयानी आउटसाइड. सो अभी आई एम जस्ट ऑन माई वे टू दैट प्लेस. सो आई विल सी ऑन द अदर साइड. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Okay, so finally the biryani is here and I cannot wait to try this. So it's really nice and for me like I like eating spicy. So जो usually यहाँ पे बिरयानीज होती हैं वो of course थोड़ी सी spicy होती हैं, because जो लोग हैं like people from Pakistan and from like Asian countries से they like to eat spicy food. So अब ये थोड़ी सी spicy है and it's really yum. और basically जो है बिरयानी this is from Alnas. तो ये काफ़ी मशहूर है. अगर if you want to try, so definitely give it a try. जो बिरयानी थी दैट वाज लाइक रियली यम. आई हैड दिस बिरयानी आफ्टर रियली लॉन्ग टाइम, बिकॉज वरना जब भी मैं पाकिस्तान आती हूँ तो मैं यहाँ पर नहीं आ पाती. एंड यूजुअली लाइक आई मेक बिरयानी एट होम. बट देन अगेन मैंने यही बात बोली कि घर की और बाहर की बिरयानी में बहुत डिफरेंस है, तो दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है. सो लाइक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइन वर आस्किंग लाइक व्हेन आई कम ओवर हियर टू कराची, एज आई वर्क विद डिफरेंट नेशनैलिटीज, सो मोस्ट ऑफ द टाइम they ask me, is it safe to come to Pakistan, like if they ever come over here? So to all the people who are not from Pakistan who are watching this video, I would like to say, because now the tourism has been really much improved in Pakistan, and like if you're coming with your family, and even though if you want to go to northern areas or something, so it is really secured, because there is like a separate police for the tourism which is doing the patrolling, and also they are helping people who are coming from a different country. So if you're like watching my video, and if you have watched other videos like where I went to
northern areas and you feel like that, you know, visiting Pakistan, so I would like highly recommend you. Okay, you should. Okay, ji, so that's it. That was like a really short vlog. I was just going to eat biryani, so मैंने सोचा that I should share my experience. And so if you really like watching this video, so please give it a big thumbs up. And if you're watching me for the first time, so please don't forget to subscribe. And also if you like, you can follow me on my Instagram. So मैं आपसे मिलती हूँ in another video very soon. So till then, please take care of yourself and others around you.